Very good morning, students. I hope you all are doing great in your studies and also revised your previous chapter. Today we are going to start a chapter 6 which is our helpers. तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो हमारी फैमिली का पार्ट नहीं होते but still they help us a lot in various our activities. So let's learn about them in this chapter. The name of our chapter is Our Helpers, and the topics which we will discuss are people who help us, dignity of labor, and our social reforms. Now, we cannot do all the work ourselves. हम अपना सारा काम खुद से ही नहीं कर पाते. We have to take the help of others for many things. There are many helpers who work for us to make our lives easy and comfortable. Here are some people who provide us with essential service such as sweepers, maids, gutter cleaner and mechanics. Now all the above people serve us in various ways. हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे ह्यूमन बींग्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी में हमें उनकी रिक्वायरमेंट होती है और वो हमारी हेल्प करते हैं. तो ये सभी जो है ये हमें सर्व करते हैं इन वेरियस अदर वेज. सम ऑफ देम वर्क इन आवर होम्स व्हाइल अदर्स हैव देयर ओन वर्क प्लेस. कुछ ऐसे ह्यूमन बींग्स होते हैं जो हमारे घर आके हमारी मदद करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनका अपना एक वर्क स्पेस होता है जो वहीं से हमारी हेल्प कर रहे होते हैं. The work done by them is essential for the comfort and safety of members of society. All human beings do some work to earn their livelihood. It is known as their occupation. Now, there are two types of work. दो तरीके के वर्क होते हैं. एक होता है मेंटल वर्क और एक होता है फिजिकल वर्क. मेंटल वर्क को क्या चाहिए? गुड एजुकेशन और ट्रेनिंग चाहिए. एंड पीपल हु डू मेंटल वर्क आर रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी. Their work is considered to be clean work. जैसे engineers, doctors and teachers are example of people who do mental work. Now, any work that involve physical labor उसको physical work बोला जाता है. These kind of work do not require very high educational qualifications. ऐसे कामों के लिए हमें बहुत high अच्छी education qualification नहीं चाहिए होती. Hence, proper training भी इसमें required नहीं होती. जैसे example of people who are physical workers as cobblers, masons, carpenter and rickshaw pullers. So this is your activity which says color the blue for blue collar workers and white for white collar jobs. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ब्लू कॉलर वर्कर्स और व्हाइट कॉलर जॉब्स फाइंड करनी है. सो लाइक ड्राइवर क्या है? ड्राइवर एक ब्लू कॉलर वर्कर है बिकॉज ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं जो ज्यादा स्किल्ड नहीं होते, बहुत ज्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनकी नहीं होती. दे आर जस्ट नॉर्मल लेबर वर्कर्स, तो उनको हम ब्लू कॉलर वर्कर्स बोलते हैं. और व्हाइट कॉलर जॉब्स होती है जो हाई प्रोफाइल जॉब्स होती है, जो हाई एजुकेशनल जिनका बैकग्राउंड होता है उनको हम व्हाइट कॉलर जॉब्स पे मार्क करते हैं. सो वी कैन टेक हेयर ब्लू फॉर ब्लू कॉलर जॉब्स. जैसे ब्लू कॉलर हो गई ड्राइवर, so we will color driver for blue collar, then minister for white, then maid is for blue collar, electrician is blue collar and washerman is also blue collar, and white is pilot and minister. Next, moving forward, now people who help us, ऐसे लोग जो हमारी मदद करते हैं. In our day-to-day lives, there is always a need to take help of others. They help us in doing various jobs for a certain amount of money. Services that we need every day are called essential services. ऐसी services जो हमें हर दिन चाहिए वो हमारी essential services होती है. Let us study about some people who provide essential services to us. जैसे cook. तो एक लार्ज फैमिली के अंदर इफ बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली, अ पर्सन इज हायर्ड फॉर कुकिंग. हम क्या करते हैं, एक लार्ज फैमिली है या फिर एक ऐसी फैमिली जिसमें सभी लोग वर्किंग है, तो वहां पे क्या होता है, एक कुक एज अ पर्सन रखा जाता है फॉर कुकिंग. दिस पर्सन इज नोन एज कुक. ही शी इज सपोज टू बी एन एक्सपर्ट इन कुकिंग. फिर हमारे पास आते हैं मेड. इन रिच एंड लार्ज फैमिलीज फीमेल सर्वेंट को हम एम्प्लॉय करते हैं टू डू हाउस वर्क. शी इज कॉल्ड मेड. शी डज द हाउस होल्ड वर्क सच एज क्लीनिंग, मॉपिंग द रूम्स, क्लीनिंग डिशेस एक्सेट्रा फॉर फुल टाइम. अ मेड ऑफन लिव्स इन द हाउस. नाउ स्वीपर कौन होती है? स्वीपर होती है जो हमारा हाउस को, स्ट्रीट एक्सेट्रा को क्लीन करती है यूजिंग अ ब्रूम एंड मैनेजेस द हाउस होल्ड गार्बेज. द ब्रूम्स फॉर स्वीपर्स आर स्पेशली फिटेड विद लॉन्ग हैंडल्स दैट मेक देयर जॉब इजी. गार्डनर्स कौन होते हैं? गार्डनर्स looks after the garden and water the plants. He grow flowers and ornamental plants etc. He manages the garden to make it look beautiful. Cobbler. Cobbler is a person who mends our shoes that are broken, torn or damaged. Do you know
1st May celebrated as International Labour Day. It is an activity which says encircle the correct option. Social workers or helpers work for free to serve the community. So they are the social workers who work for free to serve the community. Then the education or advertisement is the best tool to create awareness of the dignity of labor. So it is education. Now, moving forward to the next topic, which is dignity of labor. So dignity of labor states that all type of jobs are equal, respectable, and that no occupation is superior or inferior. तो डिग्निटी ऑफ लेबर ये बताती है कि जिस भी तरीके की जॉब्स है जो ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं वो सभी रिस्पेक्टेबल है, सभी अच्छी हैं, सभी एज एन ऑक्यूपेशन कंसीडर होती है, कोई भी उसमें सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं होता. It emphasizes on the virtue of equality. Dignity of labor encourages a person to enjoy their work and do their job with dignity. We all depend on one another to provide essential services needed in the society. हम सभी लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं essential services के लिए, and the cook, gardener, sweeper all provide us with useful services. We must respect people from all kinds of work fields. The people who work for us should be treated with respect and dignity because without them it is difficult to imagine a smooth life. यानी कि हमारे पास जो भी हमारे लेबर वर्कर्स होते हैं या जो भी हमारे लिए हमारे एसेंशियल वर्क कर रहे होते हैं, हमें उन सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, डिग्निटी उनको प्रोवाइड करनी चाहिए एज वेल एज, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होंगे तो हमारी लाइफ स्मूथली फंक्शन करने में प्रॉब्लम करेगी. नाउ आर सोशल रिफॉर्मर्स. सोशल रिफॉर्मर्स जैसे स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, विनोबा भावे, महात्मा गांधी वर prominent advocated of the dignity of labor. Next is Mahatma Gandhi and cleanliness. So we must respect all occupations. Every kind of job or work is worship to God. There is no high or low status in work. Work के अंदर कुछ भी high या low status नहीं होता. Mahatma Gandhi said these words. He promoted चरखा to implant dignity of labor among all. उन्होंने क्या किया था? चरखा को प्रमोट किया था ताकि वो सबके बीच में डिग्निटी को प्रमोट कर सके. He asked his followers to do all types of job and respect all occupations. उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बोला आप हर तरीके का काम करो और हर तरीके के काम को रिस्पेक्ट दो. He believed in non-violence, dignity of labor and respect for all human beings. He always assured sweepers that there was no disgrace in doing jobs. He called this work essential social work. He said to people of India, so long as you do not take the broom and the bucket in your hands, you cannot make your towns and cities clean. जब तक आप अपने हाथ में bucket नहीं लोगे तब तक आप अपने cities और towns को clean नहीं कर पाओगे. He fought against untouchability and worked for the upliftment of the low caste people. He named untouchables as Harijans, which means son of God. Many times he lived with Harijans in their colonies. He tried to develop self-respect in them to join the mainstream. It is your glossary where mental means relating to the mind, essential means extremely important or necessary, dignity means the state of being worthy of honor and respect, sewage means wastewater and excrement conveyed in sewers. Let's review the chapter. Services that we need every day are called essential services. Physical work involves physical labor. Mental work requires good education and training. Various people like maids, cooks, cobblers, gardeners help us in day-to-day life, and dignity of labor states that all types of jobs are equally respectable. Let's do the exercise. First is tick the correct option. Gardener looks after the garden. Who mends our shoes that are broken, torn or damaged? Cobbler. Dash cleans up our houses and vessels. Maid. Dash promoted Chakra to implement dignity among the labor. Mahatma Gandhi. Next is fill in the blanks. People who do dash work are respected in the society. Mental. Services that we need every day are called essential services. The dash looks after the garden and water the plants. Gardener. Dash believed in non-violence and dignity of labor. Gandhi ji. Next is match the following. Cook. Cooks food. Gardener looks after the garden. Maid does housework. Cobbler mends shoes. Next is true false. Any work that involves physical labor is called physical work.
True. Sweeper looks after garden and water the plants. False. Cobbler is a person who mends our shoes that are broken, torn, or damaged. True. So students, this was a chapter all about our helpers. ऐसे human beings जो हमें out of our family help करते हैं in various other ways and essential works. So do revise the chapter again and also learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.